Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This video session is for English text for class 8 and this is lecture number 21. My dear students, I hope you all are fine and must be having good time. In the previous class, we did exercise 1, 2 and 3 of unit 2, and today we will do exercise 4 and exercise 5. You will do exercise 4 on the book and exercise 5 on the notebook. So kindly take out your textbook for exercise 4 on page number 25. Exercise 4 is: the poet has described the main features of different provinces in each stanza. Follow the example of stanza 1 and complete the following table in your notebook. One province is covered in each of the other stanzas. बेटा जो पोम माय ब्लेस्ड ब्यूटीफुल लैंड हमने पढ़ी है, उसमें पोएट ने मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोविंसेस, डिफरेंट सूबों की कुछ मेन फीचर्स और लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें डिस्क्राइब किए हैं. तो हमें ये जो टेबल दिया हुआ है, तो नेम ऑफ प्रोविंस, सूबे का नाम लिखना है, उसके 2 मेन फीचर्स लिखने हैं और वहाँ के लोगों की क्या खुसूसियात हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो यहाँ पे लिखना है जो पोम में हमें बताई हैं. एक उन्होंने हमें सॉल्व करके दिखाया है. तो स्टेंजा 1 में जिस प्रोविंस का जिक्र है वो है खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, और 2 मेन फीचर्स क्या हैं इसके: स्नो कवर्ड माउंटेन्स और नंबर 2 ब्यूटीफुल सीन्स. और इसके बाद जो वहाँ के लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर वार्म एंड ब्रेव. इन दिस वे वी हैव टू डू द सेम in 2, 3 and 4. In stanza 2, he described the main features of Balochistan. Balochistan, and its 2 main features are desert and minerals. And the people of this area are fearless. Okay? And in the 3rd stanza, the poet discussed about province Punjab. And its 2 main features are fertile plains and rivers, and the people are simple. So in the same way you have to do the 4th one yourself. Okay, now let's do exercise 5. And exercise 5 is: write a summary of the poem using the information you have inserted in the table above. You can begin like this. आपने समरी लिखनी है, और समरी लिखेंगे कैसे? जो इन्फॉर्मेशन हमने इस टेबल में ली है इसको कंसिडर करते हुए हमने समरी लिखनी है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा कि 2 मेन फीचर्स में स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ब्यूटीफुल सीन्स एंड द पीपल आर वार्म एंड ब्रेव. इसी तरीके से इसको इसमें एग्जाम्पल में हमें करना है. इन स्टैंजा 1, द पोएट डिस्क्राइब्स snow-covered mountains and beautiful scenes. He mentions the snow-capped mountains of the कहाँ के पहाड़ हैं? Karakoram, and the beautiful scene of the Hindu Kush. The people of this area are warm and brave. warm and brave.
So in the same way, we have to write the summary of stanza 2, 3 and 4, and then the ending. So take out your notebooks and copy the summary from the board. In the poem, My Blessed Beautiful Land, the poet describes the beauty of the various provinces of Pakistan. In stanza 1, the poet describes snow-covered mountains and beautiful scenes. He mentions the snow-capped mountains of the Karakoram and beautiful scenes of the Hindu Kush. The people of this area are warm and brave. In stanza 2, the poet describes the Karan desert and lofty mountains. He mentions precious stones and mines full of minerals. The people of this area are fearless. In stanza 3, the poet describes the fertile plains and the fields of grain. He mentions 5 mighty rivers and land of tales and legends. The people of this area are simple. In stanza 4, the poet describes Indus Delta and Mohenjo-daro. He mentions echoes of ancient times. And the people of this area are sincere and resourceful. In short, the poet thinks that Pakistan is both beautiful and blessed. He prays to Allah to keep the country and its people safe and sound. बेटा इस नज़म में शायर ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों की ख़ूबसूरती का ज़िक्र किया है, वहाँ की किसी न किसी ख़ुसूसियात को बताया है और वहाँ के लोगों की ख़ासियत बताई है। फर्स्ट स्टेंजा में सूबा खैबर पख्तूनख्वा का ज़िक्र किया है और वहाँ के बर्फ़ से ढके हुए कराकरम के पहाड़ और हिंदू कश के ख़ूबसूरत नज़ारों का ज़िक्र किया है और वहाँ के लोगों की ख़ुसूसियात ये बताई है कि वो लोग कैसे पुरजोश और बहादुर किस्म के होते हैं। सेकंड स्टेंजा में सूबा बलूचिस्तान का ज़िक्र किया है और वहाँ के कारान डेज़र्ट और उसके पहाड़ों के बारे में बताया है। साथ ही ये भी बताया है कि वहाँ पे कैसे कीमती पत्थर और मादनियात से भरी हुई कानें मौजूद हैं और इस जगह के जो लोग हैं वो बेबाक और निडर होते हैं। थर्ड स्टेंजा में उसने पंजाब का ज़िक्र किया है, वहाँ की ज़रख़ेज़ ज़मीन और अनाज के खेतों का ज़िक्र किया है। साथ ही साथ 5 बड़े दरिया और उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ और दास्तानें ये भी इसमें बताई गई हैं और यहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत सीधे साधा होते हैं। फोर्थ स्टेंजा में उसने दरिया सिंध और मोहिंजोदड़ो और वहाँ से जुड़े हुए क़दीम वाक़यात का ज़िक्र किया है और साथ ही वहाँ के लोगों की ख़ुसूसियात ये बताई है कि वो बड़े मुखलिस और ज़राए रखने वाले लोग हैं। मुख्तसर ये कि शायर के ख़याल में पाकिस्तान ख़ूबसूरत भी है और बाबरकत भी है। वो अल्लाह से दुआ करता है कि वो इस मुल्क और इस मुल्क के लोगों को महफूज और मुस्तहकम रखें। Now you have to write this summary in your notebook. That's all for today. We will meet inshallah in the next class. Take very good care of yourself. Assalamu alaikum.